Good afternoon, everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to the afternoon trading session. And I hope you guys are doing great. अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो सुबह के ओपनिंग के बाद से निफ्टी थोड़ा सा रिकवरी हुआ एक्चुअली अगर देखा जाए तो अराउंड 20-30 पॉइंट्स का आई गेस अपर साइड में रिकवरी हुआ है। तो देखते हैं ये जो यहाँ से हमें कुछ और अपसाइड देखने मिलता है। निफ्टी की फ्लैटिश नोट पे एंड होगा एंड बैंक निफ्टी भी इट्स नियरली 0.5% डाउनसाइड। उसके बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक अपसाइड दिखा था हमने। राइट नाउ इट्स करंटली ट्रेडिंग फ्लैटिश ओनली। सो we will have Nikunj sir with us today for the afternoon session. And Mayurji, Motilal लाल कभी नहीं था. It was amber, I would say. Not even yellow, it's sort of amber color हम लोग का पहले से था. And उसके बाद अभी we have recently, introduced our new logo. And आप लोग शायद को पता चल ही गया होगा. It's into blue color, white and blue. So yes, Rekha ji will definitely take your query into Bajaj Finance, considering कि हमने बजाज फाइनेंस पे हमने ऑलरेडी बात कर लिया था। काफी बुलिश स्टॉक है टेक्निकली देखा जाए तो एकदम डेली कैंडल्स पे एकदम हायर हाईज ही बनाते जा रहा है। राइट, आज भी अच्छा खासा वॉल्यूम है ये स्टॉक में। अगर आपने देखा होगा तो इट्स नियरली 5% अपसाइड आज भी बजाज फाइनेंस में। हमने लास्ट एक वीक से यही रिकमेंड कर रहे थे बजाज फाइनेंस। अगर आज के दिन पे सस्टेन करता है यही लेवल पे 8355 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, कल के दिन हम लोग को 8480 आराम से दिख रहा है यहाँ से। तो आप बजाज फाइनेंस को डेफिनेटली अपने रडार में रख सकते हो, बट अभी थोड़ा सा वेट कीजिए फॉर दी फ्रेश एंट्री। सो यस, so we have already Nikunj sir with us today. Nikunj sir, can you hear me? Yes, Avinash, am I audible? Hello, can you hear me, Nikunj sir? Yeah, am I audible? Yes, you are audible now. Okay. So give me a minute and then we are. Great. यह जो डिफेंस स्टॉक्स में आई गेस रेलवे स्टॉक्स एंड डिफेंस स्टॉक्स में इतना कुछ मेजर मोमेंटम दिखा नहीं, कंसीडरिंग कि बजट में ये दो सेक्टर्स में हमें कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स देखने नहीं मिले। बट या लेटर ऑन इन फ्यूचर काफी सारे अप प्लान्स है ये दोनों स्टॉक्स सेक्टर्स को लेके। सो अगर हम डिफेंस सेक्टर में अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं एचएल ट्रैक कर रहा है इट्स नियरली 7% अपसाइड। तो थोड़ा सा एक बेयरिश चल रहा है ये दो सेक्टर्स में। सो देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये दो सेक्टर्स के बारे में। So Nikunj sir is already here. Nikunj sir, let me know if you are good to go. Yes, we are good to go. My screen is visible, right? Absolutely, sir. You are visible. Your screen is also visible. You are good to go. Perfect. So good afternoon, Avinash. Good afternoon, everyone who have joined in to the first afternoon session of the week. As we know from last 1 month that weekly expiries are being only BSE के और Nifty के ही है, बाकी कोई रहा नहीं। तो anyways, we start with Nifty, the major index जो है उसका व्यू के क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है उस हिसाब से बताते हैं। तो एज ऑफ नाउ इट इज ट्रेडिंग 23,350 के आसपास एंड इट इज कॉट इन दिस रेंज ऑफ 700 पॉइंट्स। सो बेसिकली नीचे में 22,800 एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड वो जब तक ब्रेक नहीं करता है इट शुड कंटिन्यू टू ऑसिलेट विद इन दिस रेंज। इमीडिएट टर्म 1 वीक के पर से 23,000 is immediate support। थोड़ा सा 2-3 weeks 1 month का time horizon है तो 22,800 is very crucial support for Nifty on the lower side, and on the higher side 23,650 is the supply zone for 600-650। so as of now ये 600-700 point का range है in Nifty। it will continue to oscillate between this range। clear up move or should we say that नया fresh rally on the upside will only start about 23,750 800 के ऊपर अगर sustain करता है तो ऊपर में fresh leg of up move may start। but as of now swings both sides रहेंगे और ये range में
ऑसिलेट करेगा 22,800 नीचे में, ऊपर में 23,650 700 के आसपास. So that is what Nifty is suggesting as per the chart setup. बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो रिलेटिवली ओके है, आज थोड़ा सा बेटर ऑफ है, बट स्टिल सुबह से होल्ड किया हुआ है, तो दैट इज अ गुड पार्ट. बट इवन फॉर बैंक निफ्टी इफ वी सी एक कंसोलिडेशन में ही है. नीचे में जो गैप अप हुआ था 5 दिन पहले ऑन 28 जैन, तो वो गैप एरिया इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, जहाँ पे 48,500 के आसपास ये गैप जोन है, तो वो एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा फॉर बैंक निफ्टी. बट रिलेटिवली इट इज बेटर प्लेस्ड कि HDFC बैंक एंड ICICI बैंक आर रिलेटिवली बेटर ऑफ एज ऑफ नाउ. तो जो मेजर कंपोनेंट ऑफ बैंक निफ्टी, those two stocks are doing fine, which is why Bank Nifty is also relatively performing better. तो immediate term में अगर trading पर से बोले तो 49,000 is immediate support, ऊपर में 49,550 का एक hurdle है, and for a week or 2 weeks के time horizon से देखें तो 48,850, 48,650 is the immediate support, while ऊपर में 49,750 से 800 एक resistance point है. तो on the budget date made a high of 50,000 and from there we are back to 49,000. So range में ही volatility बनी रहेगी because VIX is higher, although VIX has crashed, even the IVs of the options have crashed because the event is out of the way, and mainly the event was mostly focused on what is it, middle class, and they have raised the slab on the income tax, that is to 12 lakhs. No one will attract any income tax up to 12 lakhs who's earning. So which is why a consumption based theme run हुई है from the budget day itself, and even today आज continue हुई है. QSR है, be it retail, be it auto, two wheelers. So जो consumption based, even Bajaj Finance जो finance करता है all these vehicles and even the smaller goods, तो ये सब stocks में अच्छी तेजी है. Other than that everything is not moving. So sector specific, stock specific market हो गया है. So we have to be there where the market money is chasing the stock rather than focusing on the themes which played out 6 months back and then holding on to it. So जहाँ पे पैसा चेज कर रहा है स्टॉक को, वहीं पे हमें बना रहना चाहिए. So निफ्टी में 22,800, ऊपर में 23,650 is the resistance. बैंक निफ्टी immediate 49,000 and उसके बाद 48,800 and 48,600 is immediate support, and ऊपर में 49,750 और 850 is the immediate hurdle for Bank Nifty. So these are the two index के levels that we've shared. One velocity idea we have shared during the day, so I'll quickly also share with you guys. Last time when I took the session, we had given SRF as a velocity idea, and the call is still open. And today we have come out with TVS Motors. So TVS Motors has given almost from November to almost 4-5 month का एक range breakout दिया है on the weekly scale, and is negated almost 6-7 महीने का consolidation phase है. So which is very good. Technically it has given a range breakout. So what we can do is, it's a velocity idea, so we have to take 1-2 months as a time horizon, but we can buy at CMP. Even dips आता है towards 2600, even then we should add or we should look to buy in strategic manner at CMP and थोड़े shares अभी लेके थोड़े नीचे लेके, and keeping a support of 2400. We are looking for a target of around 3,000 levels. So TVS Motors is one velocity idea that we are sharing right now. You have to buy at CMP. If it corrects towards 2600, थोड़ा सा dip आता है 1-2% का, we should add on to it, keeping a support of 2400. We have to look for a target of 3,000 on the higher side. So one velocity idea we have shared. Last time we have shared SRF, and it is doing pretty well, almost 3% up from where we had shared the velocity idea. So it's currently quoting at 29.30, so it is doing good. And one more stock which is looking very good for BTSP is M&M Finance. So this rural theme, which
is about to play out as the post budget. तो एक काफी strong breakout है, almost box pattern का breakout है, and almost 3-4 months, 4-5 months का consolidation breakout है on the daily scale. So even BTST for BTST American Finance is looking very good. You can buy at CMP, keeping a support of 284. Look for 297 and 310 or 305 on the higher side. So M&M Finance is one BTST idea. We have to buy today, sell tomorrow, kind of a stock. 284 के support से look for 297 and 305 on the higher side. So index का दोनों index जो major index है उसके support resistance view क्या है, how to play about that we have shared one velocity idea, that is TVS Motors 2400 is the support and 3000 के आसपास target के लिए देख सकते हैं. थोड़ा सा longer term तो थोड़ा सा hold period is between 3 to 4 weeks. So put your bets accordingly. And one BTST idea is M&M Finance we have shared. So 290 के आसपास price है, 284 के support से look for 297 and 305 on the higher side. So these are the stocks that we have shared. Index के levels we mentioned. I think in between if we get one more कुछ trade setup मिलता है index के strategy अगर कुछ समझ में आती है तो we'll definitely come across and share the same. And कोई अगर दूसरा BTSC stock हमारे radar पे आता है तो we'll definitely share that as well. So I think in the meantime, Avinash, you can take few queries and then accordingly we'll see अगर कोई trade setup बनता है, कुछ strategy अगर Bank Nifty या कोई दूसरे index में तो we'll definitely share that. So before we move ahead with the stock queries, Nikun sir, जैसे कि आपने BTST में Mahindra and Mahindra Finance दिया, right? Yes. तो हमने पिछले कुछ दिनों से already उस पे question आ चुका था एक stock query, and हमने इसे already कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले इसे recommend किया और अभी तक करते आए थे. That was Bajaj Finance. Okay. And stock देखा जाए तो बहुत technically बहुत positive दिख रहा है. तो what do you suggest on this? It is amazing. मतलब हमने I think 4 week focus करके एक हमारा product newly launch है उसमें we had covered Bajaj Finance at around 7200 और हमारा target था 7900 something target था. If I recollect it well. तो Bajaj Finance anyone who is holding they should continue to hold. एक बहुत बड़ा consolidation breakout आया है and with this new consumption जो build up हो रहा है and I think the stock can continue towards अगर ट्रेडिंग पर से तो 8600 के टारगेट के लिए वेट करें. अगर आपका और 3-4-5 महीने का अगर टाइम होराइजन है तो स्टॉक कैन टेस्ट 9000 एज वेल. तो कंटिन्यू टू बी लॉन्ग. अगर चर्न कर सकते हैं तो चर्न भी कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके कैपिटल निकाल के बाकी प्रॉफिट के शेयर रख सकते हैं. बट अगर डिप्स आता है तो यू शुड अगेन ऐड बजाज फाइनेंस. आई थिंक अगर यहाँ से कुछ 1-2 दिन में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है टुवर्ड्स 8000 और सो, दैट इज अ गुड री-एंट्री पॉइंट in Bajaj Finance. Great. Geo Finance is good to add at current levels, or should we wait for more dip for long-term view? I think Geo relatively is not performing well, so I think best as of now अगर long term है तो ठीक है. मतलब trading पर से तो you should wait for और correct हो सकता है stock towards 220 या 228 के आसपास और करेक्ट हो सकता है. तो आई थिंक यू शुड वेट इट आउट. रादर जियो फाइनेंस से आई थिंक M&M फाइनेंस इज बेटर प्लेस्ड. अगर फाइनेंस स्पेस में ही रहना है तो आई थिंक M&M फाइनेंस इज अ बेटर बेट देन जियो फाइनेंस एज ऑफ नाउ. Great. So Nika 185 call bought at 8.9. What is the view? Nika वीकली में लास्ट वीक का हाई क्रॉस किया है एंड डेली पे भी देखे तो एक रेंज तो निकला है. तो यू शुड डेफिनेटली होल्ड नाइका. जो आपका ऑप्शन है यू शुड डेफिनेटली होल्ड 175 के स्पॉट 174 के स्पॉट लेवल से होल्ड कीजिए. अगर स्टॉक 176 के ऊपर कुछ जो आज दिख रहा है कि दे सकता है तो द रैली कैन एक्सटेंड टुवर्ड्स 185-190 एज वेल. So continue to be long in Nika. Even your option will give you much bigger returns. Sir, what is the future of defense stocks? Could you please explain a little about to us after the budget has been announced?
Yeah, I think budget में थोड़ा सा expectation था कि they might increase the allocation और fresh कुछ major announcement on budget in the budget कि defense में और capital allocate करेंगे, but that didn't materialize थोड़ा, तो which is why वो बजट के 5-6 दिन पहले आई थिंक आई वाज एक्सप्लेनिंग टू समवन विद हु आस्क्ड अबाउट आरबीएनएल, तो बात तभी भी मैं बताया था कि आई थिंक जो लास्ट बजट के 5 दिन पहले ऑल द डिफेंस और रेल पीएसयू स्टॉक्स तो काफी ऑलमोस्ट 10 to 15% का रन अप आ गया था, एंड अगर कुछ अनाउंस होता तो भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ जाता, बट कुछ मेजर अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो इसलिए और स्पीड से करेक्टिव मूव आया इन ऑल दी rail PSUs and the defense stocks, be it BEL, BEML, HAL, even the shipbuilding, Mazgaon Dock, GRSC. So there was no major focus on those areas, which is why थोड़ा सा strong corrective move है. But अगर आपका horizon 2-3 years का है, तो nothing to worry. Trading position, I keep always saying कि if you're trading without stop losses, you will erode your capital very quickly. So there is no point starting a trade with as a trading and then eventually converting it into an investment. So that is a wrong approach in equity market. अगर trading position है तो अगर stop loss है, you have to honor your stop loss. That is the best way you will be in the game for longer term. So I think budget की वजह से थोड़ा सा pull off आया, but Mazgaon Dock, HAL, they are good stocks. So but थोड़ा सा bear phase में है तो you have to wait it out. Okay. Sir, can we, do we have any stock options for today? Is there any potential stock जहाँ पे हम options कर सके? Stock option, I'm not too sure. I think index में अगर कोई strategy रहेगा तो I'll definitely cover that. In stock option से, I think M&M Finance you can buy. It's a very good breakout है, so you'll definitely make 3-4% quickly today or tomorrow, by tomorrow morning. So buy today, sell tomorrow. जो mechanism है BTST का. So M&M Finance should do well. So I think you should concentrate on that. Even TVS Motors slow and steadily जो consumption का breakout आया है as a sector as a whole. So even two wheelers, be it Hero Motor, Bajaj Auto, or TVS, and TVS is a relatively better placed stock. So it should do well. Even Aisha for that matter should do well. So जहाँ पे पैसे allocate हो गए because people would save that extra 3-4 lakh जो पहले taxable income में आता था, तो people would spend. So that is the whole idea behind this quick rally in QSRs and FMCG stocks, and then eventually two wheelers, auto, even Bajaj Finance, because Bajaj Finance usually provide financing to all these small players. So which is why there is a huge shift in the focus of the stocks which previously were not doing that great, but one announcement and everything is back in flavor. Okay. Sir, ONGC, what is your view on ONGC? एक रेंज में नथिंग मेजर, बट ऊपर से एक नीचे में 240 के आसपास एक डिमांड जोन है, तो अगर 240 के आसपास आता है तो वो इट्स मतलब आप ट्रेडिंग पर से ले सकते हैं. एज ऑफ नाउ कोई सेटअप नहीं है, आज वीक है, काउंटर वो 4% नीचे है, तो अगर 240 के आसपास आता है तो इट्स अ गुड बाय. मतलब ट्रेडिंग पर से मीन रिवर्जन ट्रेड है बेसिकली. 240 के आसपास आता है with a support of 236, we look for 247 on the higher side. But as of now कोई ट्रेड सेटअप करंट जंक्शन पे तो नहीं है. Great. Suzlon. Okay. Suzlon post its result had seen almost 2-3 buy circuit and now it is trading थोड़ा सा lower. तो ये जो gap area है, I think it's come to retest that. But 53 and 52.50 are very important support for Suzlon. अगर 50 to 50 के नीचे close आता है तो I think it can correct back to the lows it made towards 47 or 48 also. So अगर आपका position है तो keep a support of 52.50 and hold. अगर नहीं है तो wait for a better entry point in Suzlon.
और अगर आपका नीचे क्या बाइंग है, अगर ट्रेडिंग पोजीशन है और 52 क्या 53 के आसपास है, तो शुड बुक आउट इन दैट. So what is the future of Yes Bank? Yes Bank. Yes Bank 18 रुपीज पेनी है, ऑल्दो पेनी लगता है, बट उसका मार्केट कैप काफी हाई है. सो आई थिंक सुसलो येस बैंक से बेटर बैंक्स आर देयर. आई मीन अगर छोटे वैल्यू के बैंक्स किसी को लेने हैं तो आई थिंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ बेटर बैंक. इवन स्मॉल पीएसयू बैंक जो पीएनबी जिसने अच्छा Q3 numbers अनाउंस किए थे, they have posted a good quarter numbers. Even for that matter, Indian Bank है, तो I think these banks are better placed than Yes Bank in my view. So Bank of Maharashtra है और PNB है, तो they are better placed than Yes Bank. अगर आपका Yes Bank का पोजीशन है तो ट्रेडिंग है तो keep a support of 18 and hold. But ऐसा कोई trust me in the stock, so I think नहीं है तो best avoid it is what my view is. Because it has not done anything from last I know how many years, so best avoid it. I think अगर position है तो keep a support of 18 and hold. नहीं है तो don't get into all this. Be with अगर large cap में जाना है तो ICICI Bank is the best bank. उसके बाद Kotak, HDFC, they are better placed and better performing banks than Yes Bank. So even करूर वैश्य बैंक जो छोटा बैंक है, तो CUB, सिटी यूनियन बैंक, तो these are better options than Yes Bank. So what is your view on Amber? I think Amber has seen a good run up. आज थोड़ा सा वापस ऊपर से करेक्टिव हुआ है, एक रेंज में है, तो नीचे में 6200 is the demand zone and support zone as well, and ऊपर में 7000 is the resistance. So 62 से 7000, तो इस 800 पॉइंट का एक रेंज है. The range breakout will come only about 7100, and नीचे में अगर 6160 ब्रेक कर देगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है. So till the time it is holding 6200 and 6165, 6160, I think there could be some bounce towards 6800 and 7000. तो अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो keep a support of 620, 6250 and hold and look for 6800 on the higher side. Great. So guys, we'll take like 2-3 more queries. And sir, what is your view on JSW Energy? I think weak है JSW Energy. The stock is making lower lows on the weekly scale and range breakdown भी आया है. तो अभी next demand zone और support zone comes near 428 से 420 के आसपास. तो और 15-20 रुपीस का एक करेक्टिव मूव आ सकता है in JSW Energy. I mean 5-6% है roughly. तो I think look for a better entry point towards 410, 420. अगर आपको long करना है तो शॉर्ट आई मीन ट्रेडिंग पोजीशन है आपकी और ऑलरेडी ओपन है, तो आई विल गिव यू अ सपोर्ट ऑफ 435 एंड होल्ड. अगर आप 435 अगर ब्रेक करता है तो द स्टॉक कैन करेक्ट टुवर्ड्स 410 आल्सो. तो अगर पोजीशन नहीं है तो वेट फॉर एंट्री पॉइंट नियर 400 व्हिच इज द डिमांड जोन. 410 410 इज अ गुड डिमांड जोन. तो वहां पे वुड बी अ बेटर रिलेटिवली बेटर एंट्री पॉइंट than current market price. So the hold आपका position long है, keep a support of 435. Great. Ircon idea for short term view. Ircon for short term view, sorry. Ircon same rail PSU है, थोड़ा सा weak है. Profit taking आई ऊपर से and नीचे में I think 184, 185 is a good support zone. तो आपका लॉन्ग है तो 185 के स्टॉक से होल्ड कीजिए. आई थिंक इन 2-3 days टाइम वी कुड सी अ पुल बैक मूव टुवर्ड्स 205 इन इरकॉन. सो 185 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए. लुक फॉर 205 ऑन द हायर साइड. इन दिस वीक यू विल डेफिनेटली सी सम पुल बैक इन इरकॉन, आरवीएनएल और आईआरएफसी. तो दिस स्टॉक लुक्स डिसेंट. तो 185 के सपोर्ट से लुक फॉर 203, 205 on the high side for this week.
Diamond Power took at 169. Please advise. $269. 169. Okay, 169. Okay, so काफी higher price पे आपकी entry है, and I think previously the stock was moving only in upper circuit. I can see in the whole last I don't know how many years. So all upper circuit करके 100 हो गया था. I don't know how, but फिलहाल तो weak है. I mean, the stock can correct further towards 80 to 85 also. So weak है. अगर बाउंस आता है तो बाउंस टू आता है towards 110 120, तो I think you should exit your position. Great. So guys, this will be the last query for today. 23 150 put bought at 50 rupees. What to do? In Nifty? Yes, I guess in Nifty. Yes. Please confirm if it's in Nifty or not. 23 150 put लिया है, तो I think डेली पे अगर देखें तो हाई का आज थोड़ा सा नेगेशन आया, बट नीचे से वापस बाइंग आई है. तो आज का लो इज वेरी क्रूशियल. 23,222 इज द लो. अगर आज का फॉलो अप कल सेलिंग आती है तो आई थिंक यू कैन होल्ड, बट 23,350 के आसपास है तो 23,400. तो अगर 23,400 के ऊपर चले जाता है तो यू शुड एग्जिट योर पुट ऑप्शन. And I think one more stock, I'll quickly share one more BTST idea. So I think Engineers India is one stock which is looking very good as a BTST. So one can do is like almost 15-20 minutes का एक जो range breakout है वो आया है in Engineers India. So we can buy at CMP, that is 160 170 के आसपास है, keeping a support of 156. Look for 172 and 174 on the higher side. So Engineers India is one more BTST idea that we are sharing. 161 के आसपास है, 161 162. Look for 173 on the higher side, keeping a support of 156. So one more BTST idea we have shared. TVS Motors is one. Velocity idea we have shared. M&M Finance is one. The other BTST, and Engineers India is the second BTST and the third trade for today's session. Great. So that's it, guys, from our end. हमने एक और BTST शेयर किया है, Engineers India. So all in all हमने आज 3 ट्रेड शेयर किया है. One was Velocity idea for TVS Motor with for the target of 3,000. Yes. The another was there was 2 more trade on, there was BTST trades. One was on Mahindra and Mahindra Finance with a target of 297 and then 301. उसके बाद जो हमने ट्रेड दिया है that is also of Engineers India with a target of 174 and the stop loss will be 156. So guys, please make sure आप लोग stop loss से ही जो भी ट्रेड ले रहे हो initiate करोगे, stop loss को आप strictly follow करोगे, because you know that will avoid you to make losses. So these are the little steps that you should at least follow. So yes, on that note, Nikun sir, if you want to add anything more before we, or you can sum up the session before we end the session. Yeah, so I think index दोनों फिलहाल रेंज में ही है. निफ्टी 22,800 वेरी क्रूशियल सपोर्ट है, ऊपर में 23,600 650 एक हर्डल है, एंड बैंक निफ्टी 48 500 600 एंड 49 800 900. तो एक 1200 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 600 700 पॉइंट की एक रेंज है. तो ये रेंज कंटिन्यू रह सकता है. कोई एंड स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक मूव विल कंटिन्यू. Cause shift is even आज थोड़ी से broader market में अगर देखें तो कुछ themes जैसे QSR है, even hotel stocks है, जो tourism focus है, and even the two-wheeler space है, जो Bajaj Finance जो financing stocks है, so they are doing relatively well. So be there where the money is chasing the stock, that I always say, जो relative outperformance है वहाँ पे रहेंगे तो you'll there higher probability of making money and you'll get a quick entry and exit. जहाँ पे the stocks are at 52-week low and they are making lower lows, there's no point buying and then hoping that it will work. So that is what we believe in,
and we want everyone to focus on that. And I think that would be all from there. I think Engineers India almost there. If they look at across a move, I have 1% का move है, 6360 हुआ है. So that would be it from our side. So yes, guys, that's it from our end. Thank you so much for joining, and please don't forget to join us tomorrow in the morning session. And if हमने किसी का भी अगर stock queries miss किया है, considering there are a lot of queries out here, please post on Stockholm. We will be more than happy to answer your queries. So yes, that's it, guys, from our end. Thank you so much for joining us. Thank you, Avinash.